We were discussing about the various points of the CV meridian. Like we have started our discussion with the CV1. हमने CV1 से अपना डिस्कशन प्रारंभ किया था. CV1 is very effective points. It is also very good point for emergency. ये इमरजेंसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है. Okay. I have discussed many things about this point. Right. If we praise the CV1 points, so it is stimulating. जब हम CV1 को प्रेस करते हैं, so we are stimulating 3 channel at a time. हम 3 चैनल को एक साथ स्टिमुलेट करते हैं. CV चैनल, DU चैनल एंड चोंगमो चैनल. So CV channel is a conception vessel. It is very important channel who is going from, we know, the root of the CV meridian. DU channel is going from the backside, and the chongmo channel, we know, is very important channel who is supplying nutrition. Chongmo, spleen for master point. So CV1 is very good point who improve yin. I already told you in the previous discussion कि ये एक ऐसा बिंदु है जो yin को improve करता है. Chongmo, because of the chongmo, its work on the dampness, it's strengthening the spine, and it's also working on the CV meridian. That's why in the spirituality, CV meridian is very important points. This is the place of Mooladhara chakra or the root chakra. CV1 को हमें जरूर squeeze करना चाहिए, activate करना चाहिए. So we can do Ashwini Mudra. In the Ashwini Mudra, we are squeezing, releasing, squeezing, releasing. We should do it 100 times and at least 2 times or 3 times a day. We can ask our patient to do this to balance CV, GV and Chongmo meridian. Right? तो हमने इसकी बात कही थी. It is a very, very important points. So when we are working on this point, in the sujog we can stimulate this point. हम सुजोग में इस पॉइंट को लगा सकते हैं. ये पॉइंट यहाँ पर होता है. With the help of this point, we can remove the dampness. So it's a good point for prostate enlargement. ये prostate enlargement के लिए भी अच्छा बिंदु है. So now, okay. So this was the first point we have discussed. It's a very good point for removing the unwanted damp heat from male and female genital parts. Male और female दोनों के genital parts से खराब हीट को निकालने के लिए अच्छा पॉइंट है. इसे $1 million पॉइंट भी कहते हैं, स्पेशली फॉर द पर्सन हु सफर विद इरेक्टाइल डिस्फंक्शन. जिसे भी नपुंसकता है, जिसे भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, उसे $1 million पॉइंट कहा जाता है. आप ऐसे लोगों को जिन्हें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, उन्हें यह पॉइंट सजेस्ट कर सकते हैं. इवन द पर्सन इज नॉट सफरिंग विद इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, यू कैन सजेस्ट दिस पॉइंट to improve the sexual virility and power. Squeeze, release, squeeze, release, squeeze, release. This is a stimulation. In the spirituality, the energy is igniting from this point. ऊर्जा यहाँ से ऊपर चढ़ती है क्योंकि ये मूलाधार चक्र का स्थान है. जब हमारा ये चक्र जागृत हो जाता है तो हमारे पास धन की वर्षा होने लगती है. ऐसा स्पिरिचुअलिटी में कहते हैं. If your मूलाधार चक्र is very good and activated, if your मूलाधार चक्र is not in the bad condition, कहते हैं कि जो बहुत ही रिच लोग हैं उनका मूलाधार चक्र काफी डेवलप होता है. Okay. If the मूलाधार चक्र is good, then there are chances to have rich, because richness, money, many times even the rich people might suffer with piles and fistula. I've seen so the piles, fistula, and multiple problems happening here if there is a disturbed energy in this part. So we can reactivate this point and bring the balance on this point. तो ये हमारा बिंदु है. फिर हमने इसके बाद अगले पॉइंट की बात कही थी जिसे CV2 कहा जाता है. CV2 is located on the pubic bone. हमारी
पीवी बॉन्ड पर पाने वाला यह बिंदु है, दैट इज CV2. CV2 is very good point. CV2 is why the CV2 is very good point. Ren2 is very good point because the meeting point of the CV with the liver meridian is ये हमारे liver meridian से connect होता है, right? So again, because we know the liver is deeply connected with the genital parts, so this point is also very, very effective to improve the genital problems, genital disharmony, urinary bladder problems and the kidney stones. इस पॉइंट को भी हम नपुंसकता के लिए यूज कर सकते हैं. Impotency and any other genital problems, we can use this point. इस पॉइंट का प्रयोग हम कर सकते हैं, right? So this is a very good point. When we are pressing the CV2 point, जब हम CV2 point को प्रेस करते हैं, there is a flush of the energy in the legs. यहां से ऊर्जा पैर की तरफ जाने लगती है, पैर की तरफ ऊर्जा जाने के रास्ते खुल जाते हैं. So when you are pressing the CV2 point, it's improving the energy in the genital part, also in the leg region. पैरों में थकान चली जाती है, पैरों में ताकत आने लगती है. It's improving the strength in the leg. अगर किसी के ठंडे होते हैं पैर तो भी वो ठीक होने लगते हैं. If the person is having cold leg, it's a very good point because cold leg is the result of poor energies. इस पॉइंट को हम प्रेस कर सकते हैं. हम पेशेंट को बता सकते हैं कि भाई आप रोज इस पॉइंट की मसाज करिए, है ना. हम पेशेंट को बोल सकते हैं कि do the massage on this point and it is very, very effective for you for many conditions, like energy will be flushing to the genital part, so it's very good for your genital organs, it's very good for your legs, it's very good for urinary troubles. यहाँ पर ये बहुत अच्छा है. TCM में कहा जाता है कि CV2 एंड CV4 ये दो ऐसे बिंदु हैं जिनको एक्यूप्रेशर देने से यूरिन, रुका हुआ यूरिन चालू हो जाता है, रुका हुआ यूरिन भी निकलना चालू हो जाता है. CV2 and the CV4 point, we can see they are very good point for anuria. यानी अगर किसी को यूरिन ना आता हो तो इन दोनों पॉइंट को दबाइए, मसाज करिए, देन यू कैन फ्लश द यूरिन. आप यूरिनरी फ्लश को बढ़ा सकते हैं. CV2 point. It was the second point. Now, then we discuss the third number point, that is CV3. From name, CV3 की बात करें. Now from the CV2 we go one tune up, that is CV3 point. ये CV3 point है. अभी हमने बताया कि CV2 is the very good point because liver meridian is meeting on the CV2, and the liver meridian is the very good meridian having connection with the genital part. Like we know the liver is the supplier of blood to the uterus. Liver is the very deeply connected with the genital part, and it's a meeting on the CV2. Now we talk about the CV3. जब हम CV3 की बात करते हैं तो CV3 एक ऐसा पॉइंट है. CV3, not only CV3 and the CV4, both points, CV3 and CV4, all the three meridian, liver meridian, kidney meridian, and the spleen meridian is passing. Even on the CV4, liver meridian, spleen meridian, kidney meridian are meeting. अब आप समझ सकते हैं कितना गजब का पॉइंट है. हमारे पैरों के जितने भी इन मेरिडियन CV3 पर भी मिलते हैं, CV4 पर भी मिलते हैं. CV3 also the meeting point of all the yin meridian of the leg, even the CV4, right? Regarding the CV3 is also CV3 हमारे
यूरिनरी ब्लडर का अलार्म पॉइंट है या द फ्रंट व्यू पॉइंट है। CV3 is the front view point or the alarm point of UV channel. So definitely it's controlling all the problem which is connected with the यूरिन। यूरिन के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको ये ठीक करता है। Then we talk about the CV4. CV4 is also the meeting point of all the three in meridian. But CV4 is also the meeting point of मिंगमेंग चक्रा, यानी CV4 अभी जो इसके बाद आएगा उस पर तीनों yin मेरिडियन तो मिलेंगे ही, लेकिन मिंगमेंग चक्रा भी मिलेगा। तो CV3 तो yin के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन CV4 yin और yang दोनों के लिए अच्छा होगा। अभी हम समझेंगे थोड़ी देर में। So with the help of CV3 we can improve the yin, we can improve the kidney yin, we can improve the body fluids। हम इसके माध्यम से improve कर सकते हैं, right? These all points are very good for sexual problems because they are the local points। कोई भी प्रॉब्लम हो, सेक्सुअली प्रॉब्लम, और ये उन सबको ठीक करता है, लाइक द प्रोस्टेट इनलार्जमेंट एंड ऑल, राइट। CB3 now, as per the TCM, CB3 is also very good for many conditions, like for the female. If some female is having excessive sexual desire, अगर किसी फीमेल को एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर है, राइट, स्पेशली ड्यूरिंग द बिफोर menstruation, मासिक के ठीक पहले जब संभोग की काफी इच्छा हो फीमेल्स में, so we can balance that condition with the help of CB3। we can harmonize the energy, we can balance this condition। when you want to stimulate this point, whether you want to needle or want to do moxa, make sure that there is no too much urine in the urinary bladder। ask patient urinate first and come for the treatment। पेशेंट को बोलो कि भैया पहले यूरिन करके आओ, फिर हम आपको ट्रीटमेंट देंगे, तो अच्छा होगा, क्योंकि इसके पीछे हमें यूरिनरी ब्लैडर मिलता है। तो ये हमारा था CV3। लेट्स टॉक अबाउट द CV4। एज आई टोल्ड यू, द CV4 is the very effective point। it is called the gate to original chi। CV4 को हम कहते हैं गेट टू ओरिजिनल chi, यानी हमारी जो ओरिजिनल एनर्जी है उसका दरवाजा है। The CV4, I told you all the three yin meridian meeting on the CV4। हमारे तीनों के तीनों लिवर मेरिडियन, स्प्लीन मेरिडियन, किडनी मेरिडियन का ये है मीटिंग पॉइंट है, but also having connection with the Ming chakra। That's why it's a very effective point for improving the yang, also improving the yin। In many protocols you can see we are using CV4, lung 7, kidney 6 and the heart 6 to improve the yin। हम इन चार बिंदुओं का प्रयोग yin बढ़ाने के लिए करते हैं। CV4 is very good point for old age। it is called the single point for old age। old age में वो बिंदु जो एक व्यक्ति को लगाना चाहिए ताकि ओल्ड एज में होने वाली सारी प्रॉब्लम्स ठीक बनी रहें, लाइक अनवांटेड यूरिनरी डिसऑर्डर्स, weakness of the legs and many other problems। it's a very effective points for
old age conditions. If the person is having full of urine in the urinary bladder, don't treat CV3 and CV4 both points. आप इन दोनों को ट्रीट मत करो, CV3 को भी ट्रीट मत करो, CV4 को भी ट्रीट मत करो अगर व्यक्ति का ब्लडर भरा हुआ है। तो हमने 2 पॉइंट देखे, हमने नीचे देखा CB3, we have seen the CB3 just down, the CB3, and here we are seeing the CB4. So both are the meeting point of all the 3 meridian, 1, 2, 3. This also 1, 2, 3. So liver meridian, kidney meridian, and the spleen meridian. दोनों ही meeting point है, right? But I told you the CV4 is also having connection with the Ming chakra. Ming chakra is the chakra of fire energies or the original chi. Original chi. So that's why CV4 is having some different quality than the CV3. यही कारण है कि CV4 के पास कुछ दूसरी क्वालिटीज हैं। मिंगमेंग चक्र के पास ओरिजिनल chi है, यांग ऊर्जा, ओरिजिनल chi. Ming chakra is having very great amount of the sexual chi. वीर्य, जिंग, जो जिंग होता है वो कहां पर है? वो मिंगमेंग चक्र के पास है। So that's why if we talk about the CV4, CV4 is working on the uterus and CV3 is working for urinary bladder. CV4 जो है के पास सेक्सुअल एनर्जीज है, इसलिए यूटेरस पर काम करता है। And CV3 is the front view point of urinary bladder. तो हमारा urinary bladder पर काम करता है। This is a very great. CV4 is having connection with the Ming chakra. So this is called tonic point. Tonic. Actually, there are CV4 and CV6, both are tonic point. We can tonify the energies, we can lift the energy with the help of CV4. हम ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं, इसलिए बुढ़ापे में इस पॉइंट को लगाते हैं ताकि ऊर्जा बढ़ जाए। On the other side, CV3 is the very good point. He expels the unwanted energies in the lower barmer. अगर किसी के लोअर बार्मर में कुछ फालतू की एनर्जी जम गई है तो आपको ध्यान होगा हम CV3 and UB22 का प्रयोग करते हैं। CV3 is the very effective point if there is unwanted excessive energies deposited in the lower barmer. We can expel the unwanted dampness with the CV3 and UB22. तो एक बहुत ही बड़ा अंतर है कि CV3 टॉनिक पॉइंट नहीं है, ये निकालने वाला है, कचरा फेंकने वाला पॉइंट है CV3. CV4 इज द टॉनिक पॉइंट. CV4 हमारा टॉनिक पॉइंट, राइट? सो CV4 इज हैविंग कनेक्शन विद द ओरिजिनल chi. हमने बताया कि हमारे जो ओरिजिनल chi है, मिंगमेंग चक्र है, उससे हमारा CV4 जुड़ा हुआ है. मिंगमेंग चक्र. मिंगमेंग चक्र इज हैविंग वेरी ग्रेट अमाउंट ऑफ द एनर्जीज, बहुत ही ग्रेट अमाउंट की एनर्जीज को ये हमारा मिंगमेंग चक्र इज हैविंग फायर एनर्जी. इसके पास फायर एनर्जी है. इतना है आपको ध्यान रखना है CV3 और CV4 के बारे में. द मेन पॉइंट CV4 टॉनिफाई, CV4 टॉनिफाई करता है एंड CV3 एक्सपेल, CV3 चीजों को बाहर फेंकता है. लेट्स टॉक अबाउट द CV5. CV5 के बारे में हम बात करें. राइट. CV5 is, as we know, CV5 is the alarm point of triple warmer meridian. अलार्म पॉइंट, ये हमारे ट्रिपल वार्मर का अलार्म पॉइंट है.
ओके, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। When we talk about the triple warmer, especially in the lower part, this energy is having connection with the triple warmer in the lower part, like in the lower abdomen, in the legs, till the feet. So if anyone is suffering with any type of the heat problems, किसी को भी गर्मी का कोई भी प्रॉब्लम है पैरों में, the person suffering with some problem in the navel, below the navel, legs, due to the heat, remember the triple warmer. अरे ट्रिपल वार्मर को याद करो, क्योंकि इसका नाम ही है वार्मर। पैरों में होने वाले गर्मी के सारे रोगों को ठीक करता है। Like someone is having itching, red eruptions in the genital part, swelling, pain in the genital parts. Okay, there is excessive hemorrhage or the bleeding from the uterus. Whatever is happening in the lower part, it's a very, very effective point of the triple warmer. ये हमारा बहुत ही effective point है, right? So we can always stimulate this point for this purpose. CB5 is one of the great points who control hormonal function. तो आप इसे प्रेस कर सकते हैं अगर किसी को हार्मोन की कोई प्रॉब्लम है, CB5, because CB5 is having connection with the triple warmer, right? Now let's talk about the CB6. CB6 one of the great point, very famous point, CB6, which is called the C of Chi. CB6 also called vitamin point, also called the C of Chi, ऊर्जा का महासागर, ऊर्जा का। कहते हैं कि मर्दाना शक्ति को बढ़ाने वाला स्पेशल पॉइंट है, इट्स इंप्रूविंग सेक्सुअल विरिलिटी। We can do moxibustion on the CB6 to improve the sexual power. Not only sexual power, it's a very good point to improve the energy. If the person is suffering with a weakness, we are stimulating CB6, CB12 and the stomach 36. हम इन 3 पॉइंट करते हैं। जब भी किसी व्यक्ति को कमजोरी है, किसी भी तरह की कमजोरी, हार्ट ची डेफिशिएंसी, lung chi deficiency, spleen chi deficiency, kidney chi deficiency, whichever the chi is deficient, we are using CB6, CB12, stomach 36, where CB6 play very, very important role. ये बहुत ही important role अदा करता है, मर्दाना शक्ति को बढ़ाता है, and it's a very, very effective points to improve the chi. So in this way, we have seen the effect of this point. Now, when doing moxibustion here, it's a good, or we can put the red color, हम इस यहाँ पर लाल रंग भी लगा सकते हैं। जब यहाँ पर हम लाल रंग लगाते हैं तब भी हमारी एनर्जी टोनिफाई होती है। So CB4 and CB6, CB4 and CB6, both points having connection with the Ming Meng chakra. दोनों का संबंध मिंग मैंग चक्रा से है। तो अंतर क्या है दोनों में? क्योंकि दोनों का ही मिंग मैंग चक्रा से संबंध है। Whether we talk about the CB6 or we're talking about the CB4, both are very good point, both are tonic point. CB4 is improving yin as well as the yang, but CB6 is improving yang. yin से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये yin को नहीं बढ़ाता, right? Because CB4, I told you earlier, the CB4 is a very good point who supply energy to the genital parts. It's affecting the uterus. CB4 genital part को ऊर्जा देता है, because CB4 is the meeting point of all the 3 yin meridian. It's improving the
जीनाटल एनर्जीज। इट्स इंप्रूविंग द किडनी, ये हमारी किडनी को इंप्रूव करता है CB4। बट CB6 is very good point. CB6, CB12 into stomach 36. There's a very good protocol to improve the spleen chi, और स्प्लीन की ऊर्जा बढ़ाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल है। इसीलिए चाइना से कोविड को भगाने के लिए यह प्रोटोकॉल जारी हुआ था कि आप अपने स्प्लीन को टोनिफाई करिए, तो फ्लेम पर नियंत्रण करिए, और फ्लेम नहीं होगा तो कोविड नहीं होगा। इफ यू आर नॉट हैविंग फ्लेम इन द बॉडी, then you will not be suffering with any lung disorders which is creating lots of phlegm in the lungs. So CB6 is mainly affecting spleen. CB4 is affecting your kidney. This is the kidney and this is the spleen. Upper one is the spleen, right? There's a very big difference. Now, both points are tonic point. दोनों ही point tonic point है, both points improving blood. So CB4 is also improving blood. CB4 improve everything. It's improve blood, improve chi, jing, yin, yang, everything. CB6 also improving the blood because it's improving the yang, so it's improving the blood. But CB4 also improving yin. I just told you, ये हमारी yin को बढ़ाता है। जबकि हम CB4-6 की बात करें, it's improved chi, like spleen chi, spleen chi, और overall chi, not only spleen chi, heart chi, lung chi, liver chi, heart chi, lung chi, kidney chi, all the chi is improved by CB6. CB6 is a very good point to improve blood and chi. ये अंतर है। अगर आपको ची बढ़ानी है, हमने कई बार बताया है कि शरीर, आपने देखा कि हार्ट की डेफिशिएंसी है तो CB6, CB12, स्टमक 36 और हार्ट के पॉइंट। लंग की डेफिशिएंसी CB6, CB12, स्टमक 36 और लंग के पॉइंट। whichever deficient is there, always start the treatment with these 3 points, then take some point of that deficient meridian. Spleen is the king of digestive tract और queen, आप queen बोल दो, king बोल दो, जो भी बोलना बोल। If the person is suffering with a problem of the intestine, first we have to work on spleen. हमें पहले spleen पे वर्क करना होगा। So if we talk about the CB4 and the CB6, the basic difference in between, CB4 is working on the uterus, just we told you, but the CB6 working in intestine, ये आंतों पर काम करता है। That's why when we are having some indigestion problems, due to the indigestion problem, we are suffering with a vitamin deficiency. We are working with CB6, and as soon as we are stimulating CB6, there is a good absorption of the vitamin start in the intestine. हमारे intestine में vitamins का absorption start हो जाता है। CB6 is the one of the great part of chi. It improves chi and even move chi. ये chi को बढ़ाता भी है और मूव भी करता है, तो कहीं रुकावट हो उसको भी CB6 दूर कर सकता है। तो ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन था CB6 CB4 के अंदर। तो चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 1 जो मैं क्विज में पूछूंगा, द डिफरेंस बिटवीन CB4 एंड CB6, हु इंप्रूविंग यिन? आंसर दीजिए, यिन को कौन बढ़ाता है, बताइए। So CB4. CB4, okay. Okay, who improve blood?
CV6. CV4 and 6 both. Yes. CV4 and 6. CV4 and CV6 both improve the blood. Who is working on the spleen and intestine? CV6. CV6. Who is CV6. working on the uterus? CV4. 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 Who is the meeting point of all the three Yin meridian? CV6. CV4. CV4 and CV4. CV3. 3 and 6. 3, CV4, CV6. CV4. CV4. CV4 and CV3. Okay, जी। CV3 की तो बात ही नहीं कर रहे हम. अब हम CV4 की बात कर रहे हैं. CV4. CV4. Okay. Who tonified chi? CV6. CV6. Who tonified kidney? CV4. CV4. CV4? Yes. वेरी गुड. तो ये अंतर है. अब आप जब भी प्रोटोकॉल का निर्माण करेंगे तो आप देख लेना भाई, इसका येन बढ़ाना है, CV4 बढ़ा ले सकते हैं, है ना, आराम से ले सकते हैं. सो अकॉर्डिंगली यू कैन डिसाइड. ओके. Sujok same effective. या सुजोग इज आल्सो वर्किंग सेम. सुजोग को कम मत समझिए. Sir, if you tonify CV4 and CV6, both yin and yang will increase, sir. Yeah, CV4 is the point who improve yin, yang, chi, jing, blood, सब कुछ बढ़ाता है वो. CV4 मतलब सब बढ़ाता है. Good enough. Good enough. So now Sir, the question, now I'm asking the question between CV3 and CV4. Difference between CV3 and CV4. CV3 and CV4. Who is the tonification point? CV4. 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 Who expelling the unwanted excessive energy? CV3. 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 Who is removing unwanted dampness from the CV3. CV3. Who is the single point for old age? CV4. CV4. Or Who is affecting the uterus? CV3. CV4. Who is affecting the urinary bladder? CV3. CV3. Who is having connection with the original chi or the yuan chi? CV4. CV4. Original chi, yuan chi, Mingmen chakra, CV4. CV4. Who tonify yang? CV6. CV4 and 6. CV3 or CV4 की बात CV4. कर रहे हैं? CV4. CV4. वेरी गुड. अब हम बात करते हैं एक पॉइंट की. चलिए, ये बहुत अच्छा है. अब ओके, राइट डाउन इन द चैट बॉक्स 3 पॉइंट. आपको चैट बॉक्स में 3 पॉइंट लिखना है. द अलार्म पॉइंट ऑफ ट्रिपल वार्मर, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द यूरिनरी ब्लैडर. आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, 2 to 3 मिनट. बोलना नहीं, लिखिए चैट बॉक्स में अलार्म पॉइंट ऑफ ट्रिपल वार्मर, SI and UV. Write down. Very nice. So CV first triple warmer, then small intestine, then UV. Very good. So triple warmer 5. अब मैं आपको बता रहा हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज. So what you told, triple warmer 5 is for this is CV5 for triple warmer, CV4 for SI, for UV. They're the front view point. Very good. Now, very important information. Let's see now. If from the navel we are going 1.5 tone down, that is CV6. अगर नाभि से हम 1.5 टन नीचे जाते हैं तो CV6 है.
Okay. So we are taking 4.1, the CV6 1.5 tune down. Then the 1 point on the right side at the level of navel 1.5 tune right. 1.5 tune left. And 1.5 tune up. So 1.5 tune all around from the navel. We are taking 4 points. हमने 4 पॉइंट लिए नाभि के ऊपर, नाभि के नीचे, नाभि के दाएं, नाभि के बाएं, 1.5 tune. Or we can take 1 to 1.5 tune. This area, 1 to 1.5 tune, 1 to 1.5 tune, 1 to 1.5 tune, 1 to 1.5 tune. These 4 points, vitamin points. इन चारों पॉइंट्स को हम विटामिन पॉइंट कहते हैं. ये बहुत ही गजब के पॉइंट है. तो CV6 को तो हमने देखा. CV6 is the point. Now if we see the CV9 from the navel region, if we go 1 tune up, that is CV9. नाभि से अगर हम 1 tune ऊपर जाते हैं तो CV9 है. Water. So if you see the CV9 is called water separation point. इसे water separation point भी कहते हैं. Physical and psychological level. Yeah. So this is controlling. Relation, area, Yeah, very nice. and societies. Yes. So we can consider it in this way. Near about the CV9 on the upper side, CV6 on the lower side, and 2.1 to 1.5 25. both side. These 4 points are called vitamin points. CV9, CV6, and 2 point on the both side. So now remember one thing. The upper point, CV9, is the point who is controlling water separation point. Okay. ये हमारा water separation point है. That's why it's a very, very effective point for edema anywhere in the body, swelling anywhere in the body. CV9. And CV6 point just we have seen. अभी हमने CV6 point को देख ही लिया. CV6 point is very, very effective points for improving the mardana shakti, takat, sexual power, energies, and chi. CV6. Now the 2.1 on the right side, near about 1 to 1.5 on the right, 1 on the left side, 1 to 1.5 on the left. So the right side point is called adrenal gland point, and the left side point is called sugar point. Sugar point. Sometimes we can see the sugar lump here. Sugar lump, diabetic lump. तो अब हमने नाभि के राइट साइड में देखा पॉइंट, वह एड्रिनल ग्लैंड का पॉइंट है, और लेफ्ट साइड में देखा वह सुगर लंप का पॉइंट है. So when we are activating the sugar lump point, which is 1 to 1.5 tune on the left side, अगर नाभि से हम 1 से 1.5 tune की दूरी पर जाते हैं from the navel region, if we are going 1 to 1.5 tune lateral, this is called the point of sugar lump. Which is 1 to 1.5 tune lateral from navel on the left side. When the person is having diabetic condition, जब किसी व्यक्ति को डायबिटीज होती है, and we can find the lump here, यहाँ पर हमें एक छोटा सा नोड्यूल मिल सकता है. ये नोड्यूल हमें 2 जगह मिलते हैं, आगे इधर और पीछे thoracic 9 के नीचे, T9 के नीचे, below the T9 on the back side.
and one lump here, and if we dissolve this lump with a massage, यहाँ पर आप पहले ढूंढो लंप को, थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है नाभि के एकदम एग्जैक्ट लेवल पे ना हो, 1 सेंटीमीटर नीचे हो, आधा सेंटीमीटर नीचे हो, थोड़ा 1-2 मिलीमीटर इधर उधर हो. This point might be, so we can press and we can find the lump, very small lump, very small nodule there. Just do the very gentle massage for a few minutes, maybe 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. And we can see the changes in the diabetes. हमें शुगर में हम उसमें हेल्प कर सकते हैं. It's a very, very effective point for the diabetic patient. In the same way, when we are moving to the right side, जब हम right side में जाते हैं, so from the navel region, if I am going 1 to 1.5 to the right side, so this is the point of adrenal gland. ये हमारे adrenal gland का point है. Adrenal gland is a very, very important gland. We can divide the adrenal gland in two parts, the outer part and the inner part. The outer part is called adrenal cortex. The inner part is called adrenal medulla. It is a special point for the outer part. The outer part of the adrenal is secreting steroids. हमारे एड्रिनल का जो आउटर पार्ट है वो स्टेरॉइड्स का सीक्रेशन करता है. And many times we need steroids. Suppose there is some infection happening in the body. To fight with the infection, we need natural steroids secreted by the adrenal gland. Sometimes we need sudden energies. Sometimes we are always in the need of steroids. मानो कि हम कभी डर गए या हम कभी इमरजेंसी में आ गए तो हमें स्टेरॉइड की जरूरत पड़ती है, तो हमारी एड्रिनल ग्लैंड सीक्रेट कर देती है. बट समटाइम आई विल टेल यू, इफ द पर्सन इज adrenal gland is hyperactive, then also this point is becoming, adrenal gland is becoming ill, adrenal gland बीमार पड़ जाती है. तो इस पॉइंट को दबाने से हम व्यक्ति की ऊर्जा का स्तर बदल सकते हैं. और तो चारों पॉइंट्स को हम प्रेशर देंगे, मसाज दे सकते हैं, बहुत अच्छी मसाज दे सकते हैं. वी कैन डू द एक्यूप्रेशर देयर, वी कैन पुट द नीडल देयर. These 4 points together are very, very effective points for improving the energies, for improving the vitamins in the human body. Right. तो यहां तक हमने समझा दिया. Next point is CV7. CV7. सर मसाज और नीडल देते हैं तो नीडल्स हम टुवर्ड्स नेवल देंगे या ऊपर नीचे या सीधा सीधा. और अगर सीधा और ये डायबिटीज में भी, और अगर हम मसाज देते हैं तो भी ऐसे पेट को ऐसे ऐसा करके देंगे या सीधा ही खाली ऐसा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? देखो मसाज करने के बहुत तरीके होते हैं, है ना. अगर किसी भी तरीके से अगर आप मसाज दो चलता है, लेकिन बस मसाज देते समय हमें एक चीज का ध्यान रखना होता है कि हम नेवल को डिसलोकेट ना कर दें. कि आपने क्या किया कि इतना फोर्स लगा दिया ऊपर की तरफ कि नेवल डिसलोकेट हो गई, इतना ना करो. बाकी आप कर सकते हो. आपको बताएं, एब्डोमिनल मसाज इज वेरी पावरफुल. इवन यू विल सी many persons, if you praise this point, are having severe pain. आप में से जो लोग अच्छे हेल्दी दिख रहे हैं ना, उनके भी अगर पेट के पॉइंट अभी दबाना चालू करें ना तो उनको भी दर्द होगा. You can massage simply rounded massage on the points, just stretching up and down, ऊपर नीचे उस पॉइंट को खींच के थोड़ा सा मसाज किया, वहीं पर गोल गोल घुमा के किया, दबा के किया, ऊपर नीचे ले जाकर किया, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. बस नाभि के पास ज्यादा नहीं खींचना है,
नहीं तो नाभि डिसलोकेट होने का डर है। सर हाँ और डायबिटिक पॉइंट एड्रिनल पैरेलली दोनों कर सकते हैं क्या ऐसे? चारों चारों पॉइंट कर दीजिए ना, चारों। पॉइंट जस्ट फॉर स्ट्रेंथ। डायबिटिक पीपल ऑलवेज नीड ट्रीटमेंट अराउंड द नेवल। डायबिटीज वालों को नाभि के पास ट्रीटमेंट की हमेशा जरूरत होती है, क्योंकि उनकी ओरिजिनल चीक कम हो जाती है। दे आर Sir, गेटिंग। we put green color around it. For the आई डोंट हैव activation. एक्सपीरियंस ऑफ द कलर, यू कैन ट्राई एंड ऑल्सो शेयर। Yes. So we can do Sir- box around the nail. सर इन पॉइंट्स पे करने पे ह्यूमिडिटी भी रिमूव हो जाएगी? क्या करना चाहिए? मसाज या जो भी नीडल्स लगा के ह्यूमिडिटी बिल्कुल करना रिमूव? चाहिए, यस यस, ह्यूमिडिटी भी रिमूव हो जाएगी, यू आर राइट। Sir, all the time you said damped and heat is me, damped and phlegm is humidity. I don't डैम्प understand. मतलब, डैम्पनेस का मतलब ह्यूमिडिटी। और फ्लेम। अब वो भी एक ही बात है, वैसे देखो अलग अलग होते हैं, लेकिन मोटे तौर पर हम एक ही गिन देते हैं। मतलब अगर आप बोलें डैम्पनेस, फ्लेम, ह्यूमिडिटी, ऑल थिंग्स आर वन। बट इफ यू गो, अगर सूक्ष्मता में आप जाओगे तो डैम्पनेस ह्यूमिडिटी तो एक ही है, लेकिन फ्लेम अलग है। आई विल गिव एन एग्जांपल। ओके। देखो, चाहे हम डैम्पनेस की बात करें, चाहे हम फ्लेम की बात करें, उनका पहला लक्षण है भारीपन। क्या लक्षण है? भारी पर। भारीपन, heaviness. So wherever the dampness is there, that part will become heavy. Suppose the person is having dampness in the abdomen, abdomen will become heavy. Person is having dampness in the uterus, uterus will become heavy. Wherever the dampness is there, that part will become heavy. Heaviness is the first symptom of dampness and phlegm. Anyone, जैसे किसी ने कहा, अब मैं एक बहुत अच्छा उदाहरण है जो मेरा फेवरेट है, जो घोस्ट होता है ना, घोस्ट। कविता जी देखा है आपने भूत? नहीं भाई, मैं अपने आप को ही देखती हूँ। तो कहते हैं कि भूत की हिम्मत नहीं आपके सामने आने की, है ना। एक बार क्या हुआ कि कविता जी रास्ते से जा रही थी और दो भूत पेड़ पे उल्टे लटके थे। तो एक ने बोला, देखो देखो कविता जी आ रही हैं। तो एक दूसरा भूत बोलता है, ये सिर्फ मन का वहम है, ये ना कविता जी बविता जी ह्यूमन व्यूमन कुछ नहीं होते, ये सब हम भूतों के मन का वहम की बात है। है ना? तो भूत भी ये सोचते हैं कि इंसान में इंसान कुछ नहीं होता, है ना, हाँ। सब वहम की बात है। तो क्या हुआ कि घोस्ट, एक्चुअली आई विल टेल यू अबाउट द घोस्ट। चंद्रमुखी मूवी में कैसे वो उठा देती है, मतलब घोस्ट इज हैविंग ग्रेट पावर। सो समटाइम यू आर फीलिंग दैट समवन इज choking your neck. Many person feeling like, oh, someone choking my neck, someone is sitting on my chest, right? And so that heaviness is called phlegm. Phlegm means which is very subtle, very subtle, but creating too much heaviness. फ्लेम मीन्स, फ्लेम का मतलब होता है कि फ्लेम और डैम्पनेस में इतना ही अंतर है। फ्लेम उसका सूक्ष्म रूप है, जैसे भूत दिखता नहीं है लेकिन बड़ा भारीपन क्रिएट करता है, वैसे भी भूत को फ्लेम ही कहते हैं एक्यूपंक्चर में, है ना। फ्लेम निकाल दो तो भूत निकल जाए, किसी का भूत निकालना उसका फ्लेम निकाल दो। इन द एक्यूपंक्चर वी आर एक्सपेलिंग द फ्लेम फॉर एक्सपेलिंग द घोस्ट, राइट? ओके, सो नाउ CV 7 point, one should down from the navel, हमारे नाभि से। एक जो नीचे होता है CV 7, इसमें CV 6 दिया है, और CV 7 CV 8 दिया है। फ्रॉम द नेवल one should down, that is CV 7, then the CV 8. Okay, so these all points around the navel, हमारे नाभि के आसपास के जितने भी पॉइंट हैं, these all points are vitamin points, all points all around vitamin. They are improving the vitamin, they are improving the original chi. ये ओरिजिनल ची को बढ़ाते हैं, विटामिन को बढ़ाते हैं, तो इनका प्रयोग हम बड़ा कर सकते हैं ओरिजिनल ची को बढ़ाने के लिए।
अब हम बात करते हैं CV8 की। लेट्स टॉक अबाउट द CV8. CV8 इज द वेरी वेरी इफेक्टिव पॉइंट्स ऑफ द नेवल, हमारी नाभि पर पाए जाने वाला है एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु। नाभि का स्थान तो बहुत महत्व वाला है। नाभि, आ जाओ आ जाओ, वनस्लम आ जाओ आ जाओ। मैं नाभि के बारे में बस आपको इतना बताऊंगा कि नाभि नेवल इज द वेरी वेरी इफेक्टिव पॉइंट्स। इफ यू डू द मोक्सा ऑन द नेवल, अगर आप नाभि पर मोक्सा करते हैं तो ऊर्जा क्यों बढ़ जाती है? तो आपने कभी फील किया है कि व्यक्ति कितना भी थका हो? स्पेशली मैंने डायबिटिक पेशेंट के साथ देखा है कि द डायबिटिक पेशेंट गेट इमीडिएट एनर्जीज व्हेन वी आर डूइंग मोक्सिवेशन अराउंड द नेवल। हम नाभि के चारों तरफ जब मोक्सा करते हैं तो ऊर्जा बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? वाई? Due द to रीजन इज these सिंपल. vitamin points. Yeah, number one, it's a vitamin points. It's to improve the vitamin. Number two, diabetic patients, Adrenal. diabetic patient having flame in the body, and they are having poor pancreas or spleen. We can tell spleen. So CV8 point is improving the spleen. ये हमारे spleen को improve करता है, and it's improving the yang energies, and it's also improving the original chi. It's improving lots of chi, great amount of the energies. डायरिया के लिए तो रामबाण है। अगर किसी को डायरिया हो रहा है, आप नाभि पे मोक्सा कर दो, तुरंत फायदा मिलता है। ओके, बट नेवर निडल द नेवल, हम नाभि को कभी निडल नहीं लगाते। देन जस्ट वी हैव टॉक्ड अबाउट द CV9 व्हिच इज द वाटर सेपरेशन पॉइंट। वी आर यूजिंग दिस पॉइंट फॉर डैम्पनेस, हम डैम्पनेस को निकालने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, राइट। तो चलिए आज के लिए इतना काफी है, अब हम मिलेंगे अगली क्लास में। हम नाभि तक पहुंच गए सर हैं। नेवल के ऊपर अपने मोक्षा कर सकते हैं? Yes. नेवल के ऊपर मोक्सा ही किया जाता है। ओ। मोक्सा ओके सर। बंद होता है, ठीक है। सर ये जो पॉइंट्स हमने देखे CV3 to CV9 और முடிஞ்சிச்சு கிளாஸ் சொல்லுங்க. 1.5 चुन बायलेटरल, वो सबसे कभी वेट गेन का चांसेस रहते हैं? नहीं, हम्म। वेट गेन नहीं हो, वेट कम हो सकता है। अगर वेट ज्यादा है तो वेट कम ही होगा। மேல சார் டிரான்ஸ்லேட் இருக்கு பாருங்க, அது அழுத்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ்ல வரும். Correct? ऐसा नहीं होगा कि वेट बढ़ जाएगा। हाँ, कोई अंडर वेट है और आप उसका डाइजेशन इंप्रूव करेंगे तो उसका वेट नॉर्मल होगा, बढ़ेगा उस कंडीशन में। ऐसा नहीं होगा कि किसी का वेट ज्यादा था और ज्यादा हो गया, बिल्कुल नहीं होगा ऐसा, बल्कि पेट कम होगा, क्योंकि लोकल स्टिमुलेशन आप कर रहे हैं ना, तो पेट का तो चर्बी, पेट के कम होगा। So thank you very much. Very good information. Okay. So hand and leg become cold, sleep in the night, night sweat in the chest, same time. सर ये पॉइंट एज इफ गुड हेल्थ के लिए आफ्टर 50 हम रेगुलर कर सकते हैं, और या किसी को भी ये सजेस्ट कर सकते हैं कि रेगुलर प्रेस? कर सकते हैं, लेकिन देखिएगा CV4 तो कर ही सकते हैं, करना ही चाहिए। लिखा भी है CV4 का उम्र जब बढ़ती है तो CV4 इज अ वेरी गुड पॉइंट, लेकिन बाकी विटामिन पॉइंट भी कर सकते हैं। बस इसका तो ऑयल मसाज करने के लिए बोलते हैं ना, गुड। यस, डू द ऑयल मसाज ऑन ऑल द पॉइंट्स, और सोते समय नाभि पर ऑयल रख के सो जाओ। आई विल टेल यू, आई हैव दिस एक्सपीरियंस। जब हम नाभि पे रात को तेल रख के सोते हैं, और आप जब नाभि पे तेल रख के सोओगे ना, तो ऐसा आपको सुबह उठोगे तो ऐसा फील होगा जैसे कहते पेड़ की जड़ों में रात को पानी डाला तो पेड़ की पत्तियां सुबह हरी हो जाती है ना। इस छोटा कोई पेड़ हो, स्मॉल ट्री, स्मॉल लाइक प्लांट, आप उसमें पानी डाल दो रात को, सुबह कैसे हरा भरा हो जाता है। इन द सेम वे, इफ यू पुट ऑयल इन द नेवल, यू विल फील योर, आपके ब्रेन तक कुछ पहुंच गया, एनर्जी पहुंच गई, मतलब नरिशमेंट हो जाता है आपका। तो नाभि आपके शरीर की जड़ है, बाकी तो आप कहीं से पहुंच नहीं सकते, नाभि से तो पहुंच सकते हो। नाभि में तेल डाल के रात को सोते समय 2-3 ड्रॉप नाभि में ऑयल लगा के सो जाओ। इट्स अ वेरी इफेक्टिव। What intervals we can do it, sir? इट्स एवरी सर विच ऑयल सर? एवरी डे विदाउट एनी, सर कौन सा तेल? कोई भी तेल।
कोई सा। coconut. सर आपने बोला था गाय का घी बहुत अच्छा, तो हाँ, गाय का सर घी, तेल कोई सा भी चलेगा, घी कोई सा भी चलेगा। We have Ginger to see moxa, घी, तेल, गा- any oil. In Ayurveda it has been told the चार प्रकार के वो होते हैं, स्नेह होते हैं, जिसमें एक घी एक तेल और 2 नॉनवेज होते हैं, तो चलता है, कुछ भी चलता है। सर इन एनी केस शुरू में ऐसा हो सकता है कि एक्सेस कफ केस में पेशेंट को कफ नेवल में ऑयलिंग करने से पहले बाहर निकले और फिर अगर उसे कफ है ना, तो आप क्या करो, तो उसे मोक्सा करो। मोक्सा इज गुड। लाइक सी क्या होता है कि हमें वो करना चाहिए जिसकी जरूरत है। अब मान लो किसी को पॉइंट हमें पता है, ऑलरेडी कफ है, तो मोक्सा करो ना, मोक्सा से उसे नाभि पे मोक्सा कर दो, तो उसका कफ भी कम हो जाएगा। तो वो केस में ऑयल नहीं डालना है कफ केस में? डाल सकते हो अगर आपको लगता है, क्योंकि कफ भी कई प्रकार का होता है। कफ गर्मी वाला कफ होगा, अगर उसे कफ है, जीभ पर पीले रंग की कोटिंग है, थोड़ा गर्मी पड़ी हुई, तो कफ तो आप कर सकते हो। लेकिन अगर शरीर पर ठंडा 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 है, तो फिर मोक्सा करो, फिर ऑयलिंग की जरूरत नहीं है। CV8 पे मोक्सा, जिंजर मोक्सा, salt मोक्सा और स्टिक मोक्सा, which is better, sir? ऑल आर बेटर। जिंजर मोक्सा, सॉल्ट मोक्सा, distance moxa, moxa box with the help of moxa box, any moxa, indirect moxa, any moxa you can do. All are effective. Okay, sir. Okay. Done. क्वेश्चन जो आप पूछते हो ना, 2 लाइन में पूछा करो, ऐसे 1 2 3 4 5 6 लाइन लिखिए, इतनी सारी लाइन। कोल्ड hand and legs become cold in the sleep at night, night sweat on the chest at the same time. तो इसके लिए क्या करना होगा कि देखो, ट्रिपल वार्मर में ऊर्जा अवरुद्ध है। See, whichever part is cold, energy is not reaching in that part. Energy is blocked somewhere. Energy is not reaching on that part. So that becomes good. I will tell you one of my experience. You know, if we want to become a good healer, then what we have to do? We should do some meditation on in our heart. हमें अपने हृदय पर कुछ ध्यान करना चाहिए. Because when we do the meditation on the heart, after some time you will feel some energy from here. It's coming to your fingertips, right? So those who are many persons are having very great feelings for others, like they are very good healer. और कुछ लोग कैसे भी हो, लेकिन जब वो पेशेंट को देखते हैं, अपने क्लिनिक में बैठते हैं ना, तो दे become with very very full of heart, full of love. So automatically the very good energy start flowing from the fingertips. On the same way, if the person in the anxiety, so the fingertips becomes the sweat from the fingertips. हथेलियों में पसीना आता है. Many young person nowadays at the age of 18 years, 20 years, 22 years, as soon as they are having some like tension, hand become weight. कई लोगों को जैसी टेंशन होता है तो हाथ गीले हो जाते हैं. Hands are having direct energy effect from the heart. One day I was doing meditation, that time suddenly my first attention came here. Then I felt something flowing from my fingertips. Oh, then I felt, wow, it's given in our acupuncture, and same thing I'm feeling today. Or in the same way, when we are in the hatred, we can't heal in the same way. हम लोगों को उस तरह से हील नहीं कर सकते. हो जाते हैं कई लोग, क्योंकि needle is also having some effect, because if you are putting the very very perfect needle, then definitely, because you are having good knowledge, you have developed the skill because of the previous practices, definitely you are going to heal. But many person having very poor knowledge, still they can heal if they are having full love in the heart, because the heart is having very wonderful energy supply with the fingertips.
whatever needle you are putting with the fingertips, it will also heal the person in the same way. Right? Just practice. We in the love while doing treatment. पहले फीस ले लो, लेना है तो बाद में लविंग हो जाओ बस फिर okay, done. So what I want to tell you, if the person is having cold hand, cold feet, definitely there is poor energy circulation, right? We have to improve the energy. And when it's in the night, जब ये रात में है, the hand and the leg become cold in sleep at night. तो ये भी चेक करो कहीं ऐसा तो नहीं एसी चल रहा है बहुत तेज, एसी है ना. Otherwise, if with the night sweat, then it is a yin deficiency. अगर रात को पसीना भी आ रहा है, फिर पसीना आ गया, first the sweat is coming, then after that these parts become cold. That is a yin deficiency. And backs for the urine frequently, that also might be yin. If for the same patient is coming, it might be yin deficiency. Qi deficiency also might be there, frequent urination. Hands and leg, backup for urine frequently, hands and leg very thin. Yeah, thin also yin deficiency. Age of 49. Yeah, yin deficiency might happen with the growing age, like after the 40, 45, 49. As we are growing older, there are more chances of the yin deficiency. Weight is 52. Yes, very less weight. That is also yin deficiency. CV4 and CV8 point will help. Go with the yin deficiency protocol. Definitely CV4, but CV5 is very good point. CV5, because I told you CV5 is the front view point of the triple Barmer, and when you stimulate the CV5 point, it will send lots of energy in the leg, right? The sweat only in the chest. Yeah, but if it is in the night, that is yin deficiency. Okay, because sweat in the day, that is qi deficiency. In the night, that is yin deficiency. रात को कुछ भी होता है तो वो yin deficiency की कैटेगरी में आ जाता है. Okay. Thank you, sir. Good Good night. night.